All right. So this is our fourth lecture, and today we are going to look at the journey map and the information architecture. I have went through the user personas. Most of it is fine. सबने ठीक बनाया जिन्होंने मुझे भेजा है. एक feedback है और अंजना, if yeah, he's there. She is there on the call. Uh, goals and how we can help. आपके सारे same है, so it cannot be same, right? So work on that piece. बाकियों के मैंने देखे. अक्षय ने मुझे भेजा. आपने सिर्फ एक ही भेजा है अक्षय. आई वुड रिक्वेस्ट कि बाकी के भी बना दो. रिया के नहीं आए हैं. रोहन, योर्स इज फाइन. सुप्रिया, आपके भी ठीक है. हाँ. so I think I haven't received much. और आज काफी सारे एब्सेंट भी है, but no worries. So we'll continue ahead with the journey map and the architecture. So to start with, what exactly is journey map? When we as a user, we look at the website, right, or we look at the mobile app, there is a certain journey that we follow subconsciously, because not necessarily we always land on the home page of a website, right? So for example, if I am searching for a particular thing on a website, say weekend gateway locations near Mumbai. So it is going to take me to make my trip, but it is not going to take me to the homepage. It will take me to a page where there is a list, some sort of a blog or some packages, etc. Sorry, right? So, so it is always a journey, that a user follows. Correct. So now, what is that journey? We'll have a look at that today. Let me quickly share my screen. Yes. All right. All right. So journey maps and architecture. All right. So now, what exactly is a journey map? Okay. All right. So let me take up an artboard. Say 1920 by 108. Okay. Now, what is a journey map? So there is a chance that when a user searches for something, correct? So we say forget about the boxes initially. The user searches on Google. Yeah, he does a random search on the Google that maids near me, right? ऐसा कुछ वो search करता है. Once that is done, he gets some result on the Google. और वहाँ से he lands on our website.
ठीक है, मेड फाइंडर वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट पे नाउ सिंस यू आर वर्किंग ऑन अ मोबाइल ऐप, करेक्ट। सो वेबसाइट पे क्या होगा, हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे जहां पर हम बताएंगे कि व्हाट डज आवर ऐप डू, ऐप कैसे क्या करता है ना, एवरीथिंग। ठीक है, सो इट वुड बी अ लैंडिंग पेज फॉर मोबाइल ऐप। सो कोई वेबसाइट पे आता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एसईओ एंड एवरीथिंग, एंड देन ही और शी they download our app. So we are assuming it's a app only service, just like Uber and Ola, right? Once they download the app, that is when our app journey starts. So what they do is they first see the splash screen. Now what is a splash screen? जब हम कोई ऐप चालू करते हैं तो उसका लोगो आता है, right? लोगो में एनिमेशन वगैरह भी होता है. So now that is called as a splash screen. ठीक है? So let me quickly pull up couple of examples for you guys of splash screen. Then so if I quickly search say splash and in mobile, so these are some of the references. ये जो first screen हमको दिखती है ना, ये वाली, this is called as a splash screen. So splash animation. Yeah, so this is a splash screen. ठीक है, an example of a splash screen, हम जिसको splash screen बोलते हैं. Not this one, this one. Yes, this is a splash screen again. So you see, these are some of the examples of splash. Now, once they are done with the splash screen, what happens next is they, get to the onboarding piece. User onboarding. Now, what is user onboarding? So let's go back to our dribble again. So if you see this, where you see the steps, where we have this previous, next. So these are the onboarding screens, okay, where you introduce the app. And the first screen that you see, this one, is your splash screen. Okay, we'll paste this also as an example for this. Okay, so this is the onboarding screen, and what we saw on the left part is the splash. Now moving back to this. So user जब आएगा वो onboarding वगैरह देखेगा, ठीक है. अब we have to first finalize whether we want to give them the data without even logging in, correct? Else we ask for the login. Now इसके दो तरीके हैं. If we give them the login, it can be a hindrance because the concept is new. They might think कि whether ये app है सही है, मिलेगा नहीं मिलेगा. So we need to give them some bait in order to hook to the app. So what we will do is we'll first directly take them to the dashboard. Dashboard is nothing but the home, right? So home पे हमारे कुछ चीजें होगी that we will finalize. They will probably search, and then they'll go to the listing. And here what we will do is, here is where we will create that hook, that in order to look at the pricing, you need to log in. Okay, you need to log in, and then once you log in is when you see the made detail page. All right, so this is one particular flow of a user where
The journey is users land on the app from website, right? This is the first time user, correct? They are downloading the app for the first time. Now, moving ahead to the second type of the user, which is say this user only, but he already has the app. So now in that case, what will happen is user is trying to book a maid. All right. So here he already has the app. He has logged in and done all sort of झमेला here. ठीक है. So अब इसका क्या होगा? सबसे पहले इसको splash screen तो दिखेगी, because splash screen सबको दिखती है. First time user को भी, second time को भी. But now he won't see a user onboarding screen because वो already first step से cross हो चुका है. So he directly land on the dashboard. ठीक है. Once he lands on the dashboard, he will search and he will see the listing. ठीक है. Now अब उसने login भी करके रखा है. He is here to book. So we are assuming that he is already a logged in user. ठीक है. So here what will happen is he will see all the maid detail page. Correct. He will probably book the maid. He will fill up a form. He'll make the payment, partial payment, and we will get a successful screen. All right. Yeah, Rohan, I'll get back to you in a minute or so. Yeah. Yeah. And then he'll get the successful screen. Okay. So now, if you see, this sort of journey is different, where a second time user who is already logged in, he has everything already in the app store, right? So he quickly does the search, he gets to the main detail page, he books the maid and he makes the payment, right? अब इसमें कोई ऑफलाइन प्रोसेस होगा नहीं होगा वो सब सेकेंडरी. हियर वी आर ओनली लुकिंग एट द जर्नी मैप्स. सो ये जो फ्लो है ना, इसको हम बोलते हैं जर्नी मैप. नाउ दीज आर डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस. जैसे एक हमने बनाया फर्स्ट टाइम यूजर का जो गूगल से आया है, एक यूजर हमने बनाया जो ऑलरेडी लॉग्ड इन एग्जिस्टिंग यूजर है. एक यूजर ये हो सकता है, मान लो कि इसका सब कुछ सेम होगा. यूजर is trying to book a maid first time. और फर्स्ट टाइम करेगा तो यहाँ पर हम एक स्टेप और ऐड कर देंगे, which is registration. Register, and then he gets to the maid detail page, then he books the maid. अब फर्स्ट टाइम यूजर है, करेक्ट, ही बुक्स द मेड बट वो पेमेंट कंप्लीट नहीं करता है, तो उसकी जर्नी यहीं पे स्टॉप हो जाती है. करेक्ट, उसकी जर्नी यहीं पे स्टॉप हो जाती है. तो अब दिस इज अनदर यूज केस. सो ऐसे हमारे पास जितने भी यूज केस हो जो यूनिक वंस है, सिर्फ हमको उतने ही बनाने हैं, राइट? सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ जर्नी मैप. We'll quickly just beautify this. Yeah, Rohan, you can speak in the meanwhile. So this particular thing is called a user flow or a user journey map or what, like, and if it is so, You can what call would it be the as, difference between the two? no, so there is no difference. So there are many different terminologies in UX UI, to be very honest. You can call this as user flow, you can call this as use cases, you can also call this as journey maps, right? It's all one and the same. So Okay, different people, different guys have their own terminologies, you know. So a lot of people at their workplace call this as journey maps. A lot of them, you know, call this as flows. It's one and the same. There's no difference. So this is how, you know, you refine each and everything. Okay? So ये जैसे हम सब बनाएंगे. So now ये हमने जर्नी मैप देख लिया. अब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है? Always keep a habit of naming your frames. ठीक है?
so it's always easier to prototype it later. अभी हमको भले यहाँ करना नहीं है, but habit होनी जरूरी, ठीक है. अब let's create a information architecture. Now what is a information architecture? It is list a journey of the entire app consolidated way. ठीक है. So हमने जितना भी ये सब बनाया है अभी, ये यहाँ पर सब रिपीटेटिव है, राइट. डैशबोर्ड, सर्च, ये वो. जर्नी मैप में सारे ऐप के या वेबसाइट के सारे पेजेस डिफाइन होते हैं, ठीक है. तो जैसे हम शुरू करेंगे हमारा स्प्लैश स्क्रीन से. सो वी विल टेक अप दीज जर्नीज, ठीक है. तो सबसे पहले यूजर स्प्लैश पे आएगा, ठीक है. उसके बाद वो ऑनबोर्डिंग पे आएगा फर्स्ट टाइम. विल क्रिएट टू जर्नीज. एक ही कंटिन्यू नहीं होगा, बट स्टिल विल बाइफरकेट. दैट इज ऑलवेज इजियर. नाउ यहाँ पर एक लॉगिन हम रजिस्टर देंगे, लॉगिन रजिस्टर, लॉगिन, और rather we'll say register login, and if is logging in, yeah, ठीक है, login, yeah. So now ये डैशबोर्ड पे आएगा. ये सारी चीजें हमको डैशबोर्ड पे लेके आए. अब उसके बाद अभी ना योर इम्पोर्टेंट थिंग इज the connections, because unless and until you connect, it won't make sense. ठीक है. हमको लॉगिन भी डैशबोर्ड पे लेके आएगा, एंड हमको रजिस्टर भी डैशबोर्ड पे लेके आएगा, करेक्ट. सो ये सारे कनेक्शन हमको बनाने जरूरी है. सो ये जो कनेक्शन है ये डिजाइनर्स को भी काम आएगा एंड ये डेवलपर्स को भी काम आएगा, बिकॉज दे विल लुक एट दिस एंड विल क्रिएट द एंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड स्टफ. तब आप इसमें एरोज एरोज भी डाल सकते हो, तो इट इज मच मोर क्लियर, राइट. सो यहाँ पे लॉगिन से रजिस्टर, रजिस्टर से लॉगिन पे मैं जा सकता हूँ. तो आई कैन हैव टू एरोज. ये उल्टा हो गया, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, मेक सेंस. अब इसी तरह से हम बाकी के ऐप का भी बनाएंगे, ठीक है. जैसे अब डैशबोर्ड से यूजर कहाँ कहाँ जा सकता है, तो एक हो गया प्रोमिनेंट चीज विच इज सर्च. फिर सर्च के बाद ही हमेशा लिस्टिंग आएगी, ठीक है. लेकिन हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं यहाँ पर हमारे प्राइमरी एक्शंस, जो हम ऐप में देखते हैं, जो नीचे होते हैं, राइट. 4-5 ऑप्शन होते हैं. तो उसमें एक तो हमारा डैशबोर्ड हो गया, ठीक है, उसको मैं बोल्ड करता हूँ. दूसरा हो गया सर्च, उसको मैं बोल्ड करता हूँ. अब तीसरा हमारा होगा सेव प्रोफाइल, ठीक है, जिसमें मेरा सब कुछ पर्सनल होगा. अब एक होगा माय बुकिंग्स, या रेदर आई विल जस्ट कॉल इट एज बुकिंग्स, ठीक है. दैट्स इट. इसके अलावा आई डोंट थिंक मेजरली वी नीड एनीथिंग मोर इन द फर्स्ट फेज, करेक्ट. सो ये आ गया, ये आ गया. वी हैव द पेमेंट, सॉरी, book now from, we have the payment, and then we have success or failure, right. ये सर्च के अंडर हमारा पूरा ही आ गया. बुकिंग में क्या आएगा, तो लिस्टिंग आएगा कि मैंने कितने मेड्स बुक किए हैं. इट कैन बी अ बुकिंग
डिटेल पेज जिसमें सारी डिटेल आ जाएगी, मैंने कौन सी मेड को बुक किया, कितने टाइम के लिए बुक किया, फिर मैंने कितने रुपए में बुक किया है, एवरीथिंग। ठीक है। यस सर। सो यहाँ पर लिस्टिंग हर एक केस में क्या मतलब बनेगा? लिस्टिंग का बताता मतलब हूँ क्या? बताता हूँ। सो जब मैं सर्च पेज पे जाता हूँ, करेक्ट, सो से फॉर एग्जांपल आई सर्च आइदर बाय माय लोकेशन, या अगर मैं कोई स्पेसिफिक फिल्टर डाल के सर्च कर रहा हूँ, से मेल फीमेल, या फिर आई हैव सम फिल्टर से लैंग्वेज, whatever. So एक लिस्टिंग आती है जहाँ पर आई हैव ऑल द लिस्ट ऑफ द मेल्स दैट आर नियर मी, है ना। सो इसलिए वो लिस्टिंग है। एंड ये जो लिस्टिंग है बुकिंग की, ये मैंने आज तक जितने भी मेल्स बुक किए हैं थ्रू दी ऐप, ये उसका डिटेल। सो इफ यू हैव टू refer an example, you can take booking platform say like Make My Trip or GoIBIB etc, जहाँ पर अगर आप कुछ सर्च करते हो, let me present screen को। हाँ, सो ये अब मैं अगर ये सर्च करता हूँ, सो आई गेट अ लिस्टिंग स्क्रीन, राइट। नाउ दिस इज अ लिस्टिंग स्क्रीन फॉर सर्च, where I see correct lists of different flights, है ना। एंड हियर आई हैव द फिल्टर्स। सो सिमिलर वे मोबाइल ऐप में भी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, फिल्टर उसमें नीचे वगैरह आ जाता है, एंड वी हैव द लिस्ट ऑफ द सर्च रिजल्ट। एंड जब अगर मैं लॉग इन करता हूँ, करेक्ट, right, so now if I see my list, my trips, correct, so I'll see कि मेरे कौन से मैंने कैंसिल किए हैं। so again this is a list, right, this is a list। एंड इस पे अगर मैं जाऊंगा तो फिर मुझे उसकी बुकिंग वगैरह सारी दिखेगी, करेक्ट, डिटेल। so this is how we create listing pages। क्लियर है? हाँ सर, ओके, हाँ। क्लियर। So वैसे ही एक मेन डिटेल पेज होता है, इफ यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर लिस्ट यू गेट द डिटेल पेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सिमिलर वे बुकिंग में भी वही होता है, अभी हमने जैसे देखा, करेक्ट। सो मेजॉरिटी यही होगा। और प्रोफाइल में आई विल प्रोबेबली हैव एडिट प्रोफाइल, दैट्स इट। और पासवर्ड का तो हम कॉन्सेप्ट नहीं रख रहे हैं, विल यूज द सोशल मीडिया का। ठीक है। सो ये हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होगा। ठीक है। अब इसको आप और सुंदर तरीके से बना सकते हो। आई विल शेयर फ्यू ऑफ द रेफरेंसेस। ठीक है। इनफैक्ट लेट मी डू वन थिंग हियर इटसेल्फ। सो व्हाट आई डू इज आई create auto layout, apply terms, black, and I will change font to white, right? And इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, 24, 16, let's divide, it's 12, and we'll make the edges a little round, 8। ठीक है। सो इस तरीके से हम ये हमारे सारे चीजें बनाएंगे। अब इसको थोड़ा अलाइन वलाइन करना पड़ेगा, बट वी हैव टू। ठीक है। अब ये मैं वापस एक बना दिया है, सो आई जस्ट यूज दैट। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग।
Yes, this process is same for every app. But I mean the screens may differ, but जो आर्किटेक्चर बनाने का प्रोसेस है वो यही. स्क्रीन्स कुछ सेम होगी, जैसे आपकी स्प्लैश स्क्रीन, ऑनबोर्डिंग, रजिस्टर्ड लॉगिन, वो सारी सेम होगी. बट द पॉइंट इज उसकी फील्ड शायद डिफरेंट होगी जो हम वायरफ्रेम में देखेंगे. लेकिन जो अप्रोच है वो सिमिलर होती है कि यू ऑलवेज हैव अ स्प्लैश स्क्रीन, यू ऑलवेज हैव ऑनबोर्डिंग. ठीक है, यू ऑलवेज हैव डैशबोर्ड. तो ये हमारा प्राइमरी है, तो मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ. रेड थोड़ा ज्यादा हो गया. Rather, let's do this. Let's name all these a little gray and make this one black so that we know this is the main navigation at the bottom. ठीक है, तो इस तरीके से we will refine this. एंड ये सबको भी हम जैसे प्राइमरी हमारा ये ब्लैक है, तो हम ब्लैक में रखें. तो ब्यूटिफिकेशन हमेशा लास्ट में कर सकते हो. अगर आप पहले ही ये बॉक्सेस बना के रखते हो, इवन दैट इज फाइन, कम्प्लीटली फाइन. इसमें कोई ये नहीं है कि आपको इतने मिनट में बनाना ही होता है. ठीक है, पर अब ये आता कैसे है. ठीक है, एक चीज जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी कि वी नीड टू रेफर द competitors if available. If not, there are few things which are already there in the market. जैसे मार्केट भी नहीं, बट इट्स ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम फॉर ऑल द एप्स या वेबसाइट. तो जैसे अगर मैं मोबाइल ऐप बना रहा हूँ, तो उसमें कुछ चीजें मैंडेटरी होनी ही है, जैसे कि इनिशियल जो स्क्रीन है. करेक्ट. ये चीजें चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ द ऐप. अब ये हमारा सर्च ऐप है इसलिए यहाँ पर आ रहा है, लेकिन if you are designing an app which is similar to say a task list. ठीक है, आप एक टू डू लिस्ट का ऐप बना रहे हो, तो उसमें द मेजोरिटी ऑफ द पार्ट वुड बी रिलेटेड टू टास्क. उसमें सर्च शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन टास्क के डिटेल्स, ड्यू डेट्स, करेक्ट, द फिल्टर्स विच सेज टू डू, पेंडिंग या टू डू, ओवरड्यू या डन, वो फिल्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना. असाइनिंग दोस टास्क टू योर कलीग्स वुड बी अनदर ऑप्शन. सो उसमें ऑप्शंस अलग होंगे, लेकिन उसमें भी ये सारी चीजें तो होगी स्टार्टिंग. ठीक है, सो दैट वे यू नीड टू फिगर आउट कि बाकी के एप्स क्या कर रहे हैं. सो आपका ऐप डाउनलोड करके देखना होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं. और अगर ऐप नया ही है, ठीक है, इफ नथिंग एग्जिस्ट, देन ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट के साथ बैठ के थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी. क्लाइंट के साथ बैठ के उनके मॉड्यूल समझने पड़ेंगे कि उनको कौन से मॉड्यूल्स चाहिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस. अगेन दिस इज फॉर टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज. जैसे मैंने बोला, if I combine splash, onboarding, register, login, ठीक है, या rather forget this. If I combine just these things, register, login, अब हमारे केस में अब हमारे केस में देयर इज नो फॉरगेट पासवर्ड, क्योंकि हम सोशल लॉगिन ही यूज करने वाले. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड. तो ये तीनों चीज को मिला के क्या बनता है पता है. इन तीनों चीज को अगर मैं इकट्ठा बनाऊं, करेक्ट, दिस, तो इसको हम बोलते हैं एक मॉड्यूल. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक मॉड्यूल. मॉड्यूल इज, इसको हम एक नाम दिया जाता है यूआई यूएक्स टर्म में, दैट इज ऑथेंटिकेशन.
क्योंकि आप यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हो, राइट? ऑथेंटिकेशन पार्ट, ठीक है। वैसे ही इफ आई कंबाइन दिस पर्टिकुलर पीस और इसको अगर मैं एक सेक्शन में या मॉड्यूल में डालना चाहूँ, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आई विल रिमूव दिस पीस, रिमूव दिस पीस, आई रिमूव दिस पीस। अब इसमें मैं थोड़ी और डिटेल्स ऐड करता हूँ। These are not pages, but these are, you know, more details. Say filter, sort, right, and this. So now this entire thing is called as a search module. This entire thing is called as a search module. So जब client आपको बोलेगा ना कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, you should mentally club things into modules, जो by default आती ही है ना? इसी को अगर मुझे पेमेंट मॉड्यूल बनाना है, या if someone tells me कि पेमेंट मॉड्यूल में क्या होता है, so it would be nothing but an extension of my search module. कैसे? तो ये जो आया चीज, ये तो ठीक है, the moment I say land on this particular page, make detail, correct? So मेरा next step है book now का फॉर्म, यहाँ से मेरा पेमेंट मॉड्यूल शुरू होता है, पेमेंट गेटवे, ठीक है, एंड देन माय सक्सेस और फेलियर. So now this becomes my payment module, है ना? So इस तरीके से these are called as modules. Now modules can be reused. Okay, modules can be reused in any of the apps, in the same app also. जैसे मान लो अब यहाँ पर मेरा जो यूज केस था जहाँ पर मैंने बुक मेड पे छोड़ दिया था, सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं डैशबोर्ड पे कोई एक नट्स देता हूँ कि कंटिन्यू पेमेंट, कि आपने यहाँ से आपकी बुकिंग छोड़ दी थी, कंटिन्यू पेमेंट, तो क्या होगा कि डैशबोर्ड से जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा इट विल टेक मी टू माय पेमेंट फ्लो, और मुझे मेरे वापस मेड डिटेल पे लेके जाएगा। बुक नाउ का फॉर्म अगर फिल किया हुआ है तो वो मुझे डायरेक्टली बुक नाउ पे क्लिक करने पे पेमेंट गेटवे पे लेके चलेगा, राइट? सो मॉड्यूल्स आर ऑलवेज रीयूजेबल, दे कैन बी प्लग्ड एंड प्ले, ठीक है, मैं उसको प्लग एंड प्ले कर सकता हूँ इस तरीके से। सो अगर उसको और सिंपल वे में मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सो जब हम एक थाली का एग्जांपल लेते हैं, you have rice, you have dal, you have roti and everything. So roti किससे बनती है? So wheat, rice of course rice itself is a grain, ठीक है, सब्जी है तो you have आलू, you have मसाला and etc. So ये जो छोटे एलिमेंट्स है ना, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स, ठीक है। अब कंपोनेंट्स को हम अगर मिलाएंगे सो वी क्रिएट मॉड्यूल्स, एंड मॉड्यूल्स को अगर हम मिलाएंगे सो वी क्रिएट एन एंटायर ऐप, ठीक है, या वेबसाइट व्हाटएवर। सो जैसे ये स्क्रीन अगर मैं देखूं तो ये जो बटन है, बटन्स आर रीयूजेबल, सेम वे व्हीट, राइस, जवार, व्हाटएवर दे आर रीयूजेबल। मैं व्हीट मिठाई में भी डाल सकता हूँ, सीरा बनाने के लिए मैं व्हीट की रोटी भी बना सकता हूँ, राइस से मैं ढोकले भी बना सकता हूँ, राइस से मैं ऑफ कोर्स खिचड़ी भी बना सकता हूँ, राइट? सो दोज आर रीयूजेबल। सो बटन्स, correct, the headings, the body copy, these are called as the components. Component को मिला के sorry, these are called as the elements, ठीक है, एलिमेंट को मिला के we create small components. अब जैसे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑनबोर्डिंग का एक कंपोनेंट बन गया, ये स्लाइडर, एंड ये स्लाइडर को भी मैं रीयूज कर सकता हूँ बार बार, कहीं और भी मुझे स्लाइडर यूज करना है कि नहीं, यूज द सेम स्लाइडर, ठीक है। एंड उसके बाद जब मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स मिला के कोई चीज बनाता हूँ इट बिकम्स अ मॉड्यूल, ठीक है। सो एक छोटे एलिमेंट से वी मूव अहेड टू द कंपोनेंट, कंपोनेंट से हम बनाते हैं पेजेस, एंड पेजेस से फिर बनते हैं मॉड्यूल्स, राइट? सो इफ आई हैव टू पुट अ वेरी सिंपल हायरार्की,
करेक्ट. सो कंपोनेंट से पहले आएगा एलिमेंट्स. एलिमेंट्स में क्या आता है? तो हमारे बटन्स या हेडिंग, बॉडी कॉपी एक्सेट्रा, वो सारी चीजें. अगर मैं मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ मिलाता हूँ, आई गेट कंपोनेंट्स. कंपोनेंट को अगर मैं एक साथ मिलाता हूँ, आई क्रिएट पेजेस. एंड मल्टीपल पेजेस ऑफ सिमिलर फ्लो या वट एवर क्रिएट सम मॉड्यूल. ठीक है. सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखनी है हमको, इसलिए ये है. बहुत सारे लोग, आई टेल यू, कि ये जो बटन्स वगैरह है उसको भी कंपोनेंट्स बोलते हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है. ये अगेन एक खाली डिजाइन लैंग्वेज है, बट you can call this button also component, you can also call it as element. It is completely fine. But hierarchy हमेशा यही होती है. The smaller elements that create a bigger component that create entire pages and multiple pages create modules. Clear है इतना पार्ट सबको? किसी को कुछ डाउट? Anyone any doubts? If yes, raise your hands. We can clear those doubts. नहीं? चलो, fair है. Good. ठीक है. अब करना क्या है? हम अब ये मेड ऐप बना रहे हैं, करेक्ट, एज एन असाइनमेंट, जो आप लोग को कल तक ही करना है, बिकॉज वी हैव आवर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, राइट. सो जितना भी हो सके, कोई ऐसा नहीं है कि पूरा बनाना है आपको. मैं एक और ब्रीफ दूंगा, दैट वुड बी आवर सेकंड प्रोजेक्ट. उसका आपको जर्नी मैप बनाना है एंड आपको उसका इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना है. ठीक है. ये दो चीज आपको बनानी है. ठीक है. सो वो असाइनमेंट में आप लोग को ग्रुप पे शेयर करूंगा. शेयर अ पीडीएफ, जैसे मैंने मेड फाइंडर का किया था वैसा ही. हाँ, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर वेबसाइट एंड ऐप बोथ, एंड नॉट ओनली फॉर मोबाइल. ठीक है. सो दूसरा इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट होगा हमारा, वो वेबसाइट का ही होगा. ठीक है. सो जो आपका इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और ये जो बनाना है, वो आपको वेबसाइट का ही बनाना है. ठीक है. एनी डाउट्स? एनीवन नो? चलो, ओके. ठीक है. So moving ahead to the competitive analysis, the last part of today's lecture. Let me change my sharing. Yes. So for example, now what do we do in a what do we do in competitive analysis? We ठीक है. सो मान लो कि हमारा ट्रैवल का ही हम कुछ बना रहे हैं. तो इसमें क्या होगा? वी विल लुक एट मल्टीपल वेबसाइट्स इन सिमिलर डोमेन. से मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा.com हो गया, करेक्ट, एयरबीएनबी हो गया, then we have booking.com. ठीक है. ये कुछ 4-5 वेबसाइट्स है, और भी बहुत सारी है. तो हम क्या एंगल्स पे देखते हैं, क्या फैक्टर्स है उसके. एक, उसका फर्स्ट फोल्ड, के फर्स्ट फोल्ड में इज इट इजियर टू अंडरस्टैंड और नॉट, कोई कॉल टू एक्शन है कि नहीं, उसका नेविगेशन कैसा है. ठीक है. इसके सारे पॉइंटर्स भी है. आई शेयर दैट आल्सो ऑन द ग्रुप, सो दैट एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड विथ यू गाइस. ठीक है. फिर उसके बाद वी विल कंपेयर द सेम थिंग ऑन ऑल दी वेबसाइट्स और ऐप, व्हाटएवर हम कर रहे हैं. ठीक है. एंड वी विल गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ रेटिंग from our end only, whether it is good, bad, excellent, or yeah, that's it, good, bad or excellent. Yeah, good, very good, bad, good, very good, excellent, ऐसा हो. जो एकदम सबसे बेस्ट है,
बेस्ड ऑन द यूएक्स लॉज एंड एवरीथिंग, उसका हम उस हिसाब से रेटिंग देंगे। फीडबैक से भी ज्यादा आई वुड से एज ए यूएक्स डिजाइनर आप उसको एक रेट दोगे, आप उसको एक रिव्यू दोगे, so that जब हम क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे we can tell them कि from a UX perspective if I have to rate this from 1 to 5, this is 4, this is 3, this is 2, है ना वैसे। so एक आपको ओवरऑल डिजाइन वाइज बोलना है, एक आपको नेविगेशन वाइज बोलना है, एक आपको बताना है यूज ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड कलर्स वो कैसा है, ठीक है, एक आपको बताना है द नेविगेशन और probably you know the ease of access कि आपको कितना टाइम लग रहा है टू एक्सेस समथिंग, ठीक है, ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स। सो ये यूजुअली ना सबसे पहले होता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, बट सिंस यू आर लर्निंग, ठीक है, ये हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारी चीजें जब आपको पता चल जाएगी इट वुड बी इजियर फॉर यू गाइस टू डू द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अभी हम करेंगे तो बहुत सारी चीजें बाउंसर देंगी क्योंकि यू वोंट फाइंड द करेक्ट आंसर्स राइट नाउ, ठीक है, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि हमको क्या क्या चीजें देखनी है राइट आगे चल के, so that you guys align your vision, your thoughts on those lines, ठीक है। so अभी there is one more last thing जो आप सबको करनी है आज घर पे। so this is a website lawsofux.com, इसका मैं लिंक आपको ग्रुप पे भेजूंगा। आप सबको इसको ना एक एक बार सबको पढ़ना है, ठीक है, जितने भी इसमें लॉज है सारे लॉज को आपको एक एक बार पढ़ना है, ऑलराइट। एंड अब ये आपको शायद देखने में पढ़ने में लगे यार ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, बट द मोमेंट यू नो रीड इट सिंपली, वेरी सिंपल लाइन में लिखा है इस वेबसाइट पे, द टाइम टू एक्वायर अ टारगेट इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस टू एंड साइज ऑफ द टारगेट। दैट मींस ये अगर आपका बटन छोटा है so it would be difficult for the users to click on it, right? At the same time, if it is big enough for the users to click, जैसे अगर ये है पूरा, अगर एक छोटा सा एक वो होता, so it would be difficult for me to click, right? Whereas right now if you see this, it's very good prominent button, I know कि मुझे यहाँ जाना है वापस। So Fitts law is about you know the size of the target कि आपको जिस पे क्लिक करवाना। देन गोल ग्रेडियंट इफेक्ट, so ये सारे लॉज भी है, मैं एक्सप्लेन करूंगा जो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो, बाकी सारे इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो गोल ग्रेडियंट इफेक्ट जैसे हम प्रोफाइल देखते हैं, सो प्रोफाइल में हमको हमेशा परसेंटेज दिखता है राइट कि आपने इतने परसेंटेज कंप्लीट किया है, आपका इतना परसेंटेज बाकी है। दैट ऑलवेज मेक्स द यूजर अप्रोच टू देयर गोल मच फास्टर if you give them that खाली इतना ही बाकी है इतना कर लो, you have reached 80%, only 20% is pending, you know, so the chances of users completing the task increases। इसलिए ही अगर आप देखो टास्क लिस्ट में या whatever, you know, if you are reading a book on the app, you always get the progress bar, so that progress bar keeps on telling you, you know, कि हाँ मेरा इतना ही बाकी, मेरा इतना ही बाकी। so that is nothing but a goal gradient, right? So before I go deeper into these laws, I would request every one of y'all to just read it out अच्छे से, आराम से, घर पे टाइम स्पेंड करो, मोबाइल पे भी देख सकते हो, so that when I explain it to you guys are aware about the terms of what I am speaking, of what I am trying to explain। तो मैं इसके इम्प्लीमेंटेशंस बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया है ऑलरेडी, है ना। सो वी लुक एट दोस एग्जांपल्स। सो कल जब हम मिलेंगे हमारे लेक्चर्स में, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू look at the UX laws and the concepts of behavioral science in tomorrow's lecture, ठीक है। we will also go through the information architecture that you guys have designed। जिन्होंने भी personas जो मुझे शेयर नहीं किए हैं अभी भी टाइम है, कर दो। and I'll also you know आई थिंक हाँ वो तो मैं शेयर करूंगा ही, दूसरा जो हमारा
प्रोजेक्ट है, सो दैट उसके बेसिस पे ही आप आपका इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना, राइट. सो वी वाइंड अप हियर ओनली टुडे, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है आज और बहुत सारी डिटेल्स है आज. आई डोंट वांट टू ओवरवेल यू गाइस विद टू मेनी ऑफ बोरियत वाले लेक्चर. सो इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे बट इफेक्टिव करेंगे, right? Two tasks at your end. I'll send you guys a new project. उसका information architecture और journey map बनाना है. I'll send the copy जो हमने बनाई है वो, and lawsofux.com पे जाके जितने भी laws है, जितनी भी कुछ है, आपको एक बार उसको अच्छे से go through करना है. किसी के पास टाइम मिलता है and if they are very curious, आप वो एक लॉ को पकड़ के उस पे गूगल भी कर सकते हो. You will get lots and lots of data for that. ठीक है? So, any doubts? Any clarification? Anything that you guys need? No, sir, all good. Right. So, Baki. But sir, Sorry. सर अभी जैसे अपन ने यूएक्स रिसर्च में हमने सिर्फ इंटरव्यूज और ये किए, तो देर आर देयर अदर मेथड्स ऑफ रिसर्चिंग ऑन प्राइमरी रिसर्च, लाइक अगर एक होता है जैसे हम ये क्वेश्चंस जो हमने बनाए, राइट, तो या तो आप इंटरव्यू ले सकते हो या तो सर्वेज ले सकते हो, करेक्ट. दूसरा होता है जनरल रिसर्च, ठीक है, वो भी हम करेंगे बट इट इज टू अर्ली, ठीक है. तो इसलिए आई वांट टू गिव यू गाइस अ जिस्ट ऑन व्हाट इज यूएक्स, क्योंकि जनरल रिसर्च इज बेसिकली हाउ यू सर्च अबाउट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, दैट्स इट. ठीक है. वो जो एग्जिस्टिंग डेटा लोगों ने किया हुआ है, यू ओनली एक्सट्रैक्ट दैट, नथिंग मोर. सर एक मैंने कहीं सुना था, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रायंगुलेशन. अगर आपने सुना हो, लाइक मैंने कहीं तो किसी यूएक्स डिजाइनर ने बात करी थी रिगार्डिंग ट्रायंगुलेशन, समथिंग कॉल्ड ट्रायंगुलेशन. Not something that I've heard of, to be very honest, but of course उसका भी कुछ ऑलरेडी कुछ वर्जन होगा जिसको उन्होंने अब अलग टर्म दे दिया है. सो आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल कि ये जो अभी हम देख रहे हैं यूएक्स लॉज, राइट, सो इसी लॉ को मिला के भी लोगों ने वापस ये जीस्टॉल्ट लॉ बना दिया. सो ये सारे जो लॉ है, ये लॉ ऑफ कॉमन रीजन, प्रॉक्सिमिटी, प्रेग्नेंस, राइट, इसको मिला के हम नया लॉ बना दिया व्हिच इज जीस्टॉल्ट, दैट्स इट. सो ऑल these terms keep on coming up. ट्रायंगुलेशन भी किसी ने कुछ बनाया होगा, आई एम वेरी मच श्योर, पर उसका ऑलरेडी लेट मी सी. हाँ, सी, एज आई मेंशन कि ये जो आइडिया वैलिडेशन होता है, करेक्ट, उसी को इन्होंने टर्म दे दिया ट्रायंगुलेशन इन यूएक्स रिसर्च, which is using multiple methods, sources or theoretical perspective to cross examine, confirm your findings. So जो हम फाइंडिंग ला रहे हैं, जैसे जो भी जनरल रिसर्च हम करेंगे उसका इंसाइट. आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा शायद. हाँ, इट इज जस्ट अ गूगल सर्च. सो जितना भी जैसे हम ये लेके आते हैं, whatever we say, रिसर्च का जो डेटा पॉइंट्स है, करेक्ट, खाली उसी को वापस और रिफाइन करने के लिए या उसी को वापस और कंफर्म करने के लिए दे हैव कम अप विद अ न्यू कांसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन, व्हिच इज नथिंग बट जस्ट reiterating on the same thing, right? So जैसे मैंने बोला ना कि see it is 2023 जो अभी नया उन्होंने निकाला. So it is all part so that आप यूजर को कंफ्यूज कर सको, टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल, बिकॉज यूआई यूएक्स हैज बिकम सो इन कि लोग कुछ भी नया निकालते हैं, उनको लगता है अरे हमने कुछ नया डिस्कवर कर दिया. और ऐसा कुछ है नहीं, चीजें वही होती है, बस उसको नए पैकेज में आप दे देते हैं. ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, दैट्स इट. Okay, all right. Yeah, so that's it for today, and we'll meet tomorrow again, same time, 8:30, and we'll dwell into UX laws, behavioral science,
and we'll look at the information architecture that you guys have designed. All right. Okay, sir. Cool. Thank you. Thank you so much, guys. Please do complete your assignments. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir.